Hi everyone, this is Sheetal Chaudhary, your accounts master teacher, and I welcome you all to Vedantu Commerce. We are here for a better future. So I hope that all of you are good and fine. So let's have our today's schedule. After this session, we will be having our account session for class 12th at 6 p.m. And we will be having economics session at 7 p.m. with Neha ma'am. So after this, we have two more classes, one at 6 p.m. for accounts and one at 7 p.m. for economics. So let's start this session now with some positive thoughts. It's not whether you get knocked down. It's all about whether you get up or not. तो आप कितनी बार ठोकर खा के गिरे हो, ये किसी को इससे मतलब नहीं होता कि आपने कितनी बार फेलियर्स देखे हैं. What matters is that how many times you have get up. So don't let your failures demotivate you. So guys, this is class 11th accountancy session, and if you guys are new to our channel and if you want daily updates and daily notes, then go and subscribe to our channel Vedantu Commerce. And also don't forget to like this video and share this with your friends and family. You guys can also join our official Telegram group Vedantu Commerce. We will be sharing all the notes in the PDF form in this group. Radhe Radhe Jagrati. Hi Nadeem. Hi Sushma. Hello Aditi. Hi everyone. तो जिन्होंने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी से जाएं और अभी ज्वाइन करें अगर आपको नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए. Now let's start our today's session, trial balance. In this session, we are going to continue our chapter, trial balance. So, if you want more sums on trial balance, then don't worry, we are here to provide you everything. Vedantu is here to provide you the solution of every problem. So daily at 4 p.m., I will be coming live to solve practical questions of different chapters. So stay tuned for my upcoming session and do join me every day at 4 p.m. Now, also if you want more tips and you want more tricks, then you can take Vedantu Commerce Pro Subscription. You can also take Vedantu Commerce Pro Subscription if you want to score good marks in your exam. If you want to make your parents feel proud, then also you can take Pro Subscription. If you want to study in a structured format, then also you can take Pro Subscription. Because in this Pro Subscription, we are providing you a lot of benefits, including different type of courses. We are providing you 4 types of subjects, including all the subject maths, economics, business studies, accounts. All these subjects will be covered in this Pro Subscription. Hi Preeti. Hi Abhyankar. Then we are providing you more than 10 teachers having 5 years of experience. So highly experienced teachers are provided to you. आपको अच्छे से अच्छे teachers provide किए जाते हैं. Then all these teachers will work on your areas of improvement. All the teachers will work on your weakness. सारी की सारी teachers आपकी कमियों पर ध्यान देंगी. Along with that, we are providing you more than 2,000 hours of live online classes.
You can watch unlimited live classes on the Vedantu platform of all these subjects. सारे subjects की आप unlimited live classes attend कर सकते हैं. Along with the classes, we are also providing you regular tests, regular assignments containing thousands of questions so that you can practice well for your exam. And the most important thing, all these sessions, all the classes will be conducted in English only. सारी की सारी classes किस में होंगी? English में होंगी. So, all these features are provided to everyone in this Pro subscription. मैम मेंटी की टाइमिंग्स क्या है? प्रीति, अभी मेंटी ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है. मेंटी को बहुत टाइम हो चुका है कंप्लीट हुए. नाउ वी आर डूइंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन ऑफ ईच चैप्टर. अब हम क्या कर रहे हैं? प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं, मेंटी नहीं कर रहे. So the actual price of this Pro subscription for 1 month is 3499. But right now we are giving you flat 20% discount on this Pro subscription. And after discount, you will only have to pay 2799. आपको कितना पे करना पड़ेगा? 2799 for all these subjects. So in 2799, we are providing you 4 subjects: economics, maths, business studies, account. इसका मतलब per subject की cost will be only 699 per month. आपको एक सब्जेक्ट का सिर्फ 699 पे करना है per month in this Pro subscription. After discount, सिर्फ आपको 699 पे करना है for one subject. So guys, what are you waiting for? Go and take your Pro subscription right now at flat 20% discount by using my code SCPRO. And I would love to teach you all on Pro subscription. Hi Anuj, hi Diya, hi Parth. So now let's start with today's session. How to do revision and how to solve questions of trial balance. कैसे क्वेश्चंस करें हम लोग ट्रायल बैलेंस के, कैसे रिवीजन करें? तो आइए देखते हैं कि कैसे रिवीजन करी जाएगी ट्रायल बैलेंस की. मैम आपका डेप्रिसिएशन चैप्टर समझ रही थी तो मैम बहुत इजी है डेप्रिसिएशन. आई हैव टोल्ड यू दिस कि all the chapters are easy when you are focused. तो अगर आप ध्यान से समझोगे तो हर चैप्टर इजी है और अगर आप नहीं ध्यान से समझोगे तो हर चैप्टर मुश्किल है. It depends on us that which chapter is easy and which chapter is tough. So easy. Okay. So now let's start this chapter, trial balance. We have already started this chapter yesterday and we have covered 3 questions in the previous session. कल की क्लास में हम ऑलरेडी 3 क्वेश्चन कर चुके हैं. जिन्होंने कल वाली क्लास नहीं देखी, रिकॉर्डेड सेशंस आर अवेलेबल ऑन द चैनल. डोंट वरी, यू कैन वॉच इट आफ्टर दिस क्लास. हाय गौरव. So are you guys ready for this chapter, trial balance? Raise your hands. क्या आप लोग तैयार हैं चैप्टर के लिए? क्या क्लास को शुरू किया जाए? Yes, Jagriti. Hi, Divyam. Yes, Diya. Yes, Parth. Yes, Aditi. Yes, DIY. Yes, Sushma. Preeti. Parth. Yes. Okay. So let's start today with our first, means 4th question of this chapter. Let's start with 4th question of this chapter. So, these are the balances that are extracted from the books of Ravinder Associates as at 31st March 2017. Yes, Prince. Yes, Divyam. Yes, Mayank. Okay, hi Mayank. So these are the balances that are given to us at the end of the year. From the following balances हमें क्या बनाना है? ट्रायल बैलेंस बनाना है.
So जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, सबसे पहले we will read each and every item and we will identify that whether it will have debit balance or it will have credit balance. हर आइटम को ध्यान से पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसका डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्रेडिट बैलेंस होगा. So let's start with the first item, sundry debtors. Debtors are assets, and assets will have debit balance. Then creditors means liability, and liability will have credit balance. Rent and taxes kharcha hai, it is an expense. Expenses will have debit balance. Purchases is also expense. Expenses will have debit balance. Sales is revenue, income, and it will have credit balance. ट्रेड एक्सपेंसेस, यहाँ क्लियरली बोला है एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस. रिटर्न आउटवर्ड मीन्स परचेज रिटर्न. व्हाट गोज आउट अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट, व्हाट गोज आउट इज टू बी क्रेडिटेड. हमने ट्रेडिशनल अप्रोच पढ़ी है. What comes in debit, what goes out credit. So return outward, what goes out? Credit. Return inward, sales return. What comes in? Debit. What comes in? Sales return, debit. Hi STR Gaming. Then expenses, debit ma'am. Motor vehicle is an asset, debit. Electricity is an expense. आप बिजली का बिल भरते हैं, electricity expense, debit. Then opening stock on 1st April 2016. Opening stock asset, debit. Premises, everyone is answering it correct, guys. Well done, everyone. You are doing great. Next we have premises. Premises is like a building. जैसे हमने सुना होगा, आपने सुना होगा, maintain discipline in the school premises. क्या मतलब होता है उसका? कि स्कूल के अंदर आपको discipline maintain करना है. So it is kind of building. So premises are assets, and assets will have debit balance. Fixtures and fittings. Fixture and fittings are assets, debit. Bad debt written off. Bad debt क्या होता है? जो पैसा डूब गया उसको बोलते हैं bad debt. Bad debt is a loss. Bad debt is a loss, and expenses and losses will have debit balance. Expenses and losses will have debit balance. Rent received, it is income. Income will have credit balance. Loan from Mukul. You have taken loan from Mukul. अगर आपने किसी से लोन लिया है, that is liability. Liability will have credit balance. Interest on Mukul loan. You are paying interest on liability, that is expense. Expenses, interest on Mukul loan, it is expense. Expense will have debit balance. Drawings are assets of the business. Drawings are assets of the business, and assets have debit balance. Therefore, drawing will also have debit balance. Cash in hand, asset, debit. Stock on 31st March 2017, not adjusted. So, closing stock is not adjusted, and also closing stock is not recorded in the trial balance. So, closing stock is not recorded in the trial balance.
क्लोजिंग स्टॉक को हम लोग ट्रायल बैलेंस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि लास्ट में क्या है, स्टॉक ऑन 31 मार्च 2017। सो इसको हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द ट्रायल बैलेंस। बाकी सारे आइटम्स को हम रिकॉर्ड करेंगे इन दी ट्रायल बैलेंस। सुषमा, अब आपको पूरा क्वेश्चन नजर आ गया होगा। नाउ आई होप दैट द फुल क्वेश्चन इज विजिबल टू एवरीवन। सो नाउ वी विल प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। अब हम लोग क्या बनाएंगे, ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो अब मैम दोबारा से वापस आ जाती है स्क्रीन पर। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस? फॉर्मेट क्या है ट्रायल बैलेंस का? दिस इज द फॉर्मेट। नेम ऑफ अकाउंट, LF, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। नेम ऑफ अकाउंट जिसको आप पर्टिकुलर्स भी बोल सकते हो, देन LF जिसमें हम लेजर का पेज नंबर लिखेंगे, लेकिन यहां पर हमें वो ब्लैंक छोड़ना है। देन डेबिट बैलेंस फॉर डेबिट अमाउंट, क्रेडिट बैलेंस फॉर क्रेडिट अमाउंट। दिस इज द फॉर्मेट। देन इन द नेम ऑफ द अकाउंट इन द फर्स्ट कॉलम हम सारे अकाउंट्स का नाम लिखेंगे। डेटर्स, क्रेडिटर, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रेड एक्सपेंसेस, सेल्स, परचेजेस, सबका नाम लिखना है एंड रिकॉर्ड देयर अमाउंट इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। उनकी अमाउंट रिस्पेक्टिव कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। डेटर्स डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट, रेंट एंड टैक्सेस डेबिट, परचेजेस डेबिट, सेल्स क्रेडिट, sales credit, trade expenses debit, return outward, purchase return credit, return inward, sales return debit, expenses debit, motor vehicle asset debit, electricity expense debit, opening stock asset debit, premises asset debit, fixtures and fittings asset debit, bad debt loss debit, loan from Mukul liability credit, interest on Mukul loan expense debit, drawings asset debit, cash in hand asset debit, rent received income credit, and capital. Now the most important thing, just a minute. So now you have recorded each and every item. Now we have recorded each and every item. And after recording each and every item, you will do the total. हम क्या करेंगे? We will do the total. Now, if the total is not equal, if the total of both the side is not equal, then you will put the balancing figure in the capital. हम balancing figure को कहाँ डाल देंगे? Capital में डाल देंगे. The balancing figure you will put in capital. So this is your question. Now tell me, is this clear to everyone? Yes, Preeti. Yes, Aditi. Yes, STR. Yes, Sushma. What about others? Out of 14, only 10 students had answered. बाकी के 4 students had answered. बाकी के 10 को clear है या नहीं?
Yes, Jagriti. Yes, Nadine. Okay, so this was your first question. Now coming on to the next one. Now coming on to the next question. So next question is this. Question में बोला है the following is the trial balance prepared by inexperienced accountant. It is prepared by inexperienced accountant. कोई इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट था, उसको नॉलेज नहीं थी, उसने क्या किया, ये वाला ट्रायल बैलेंस बना दिया. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू रीड्राफ्ट. आपको क्या करना है, रीड्राफ्ट करना है इसको इन अ करेक्ट फॉर्म. We are required to redraft, we are required to prepare it again in a correct form. So let's start it. This is your debit side, this is your credit side. इसने ये ऐसे बनाया है, ये वाले डेबिट साइड रिकॉर्ड कर दिए, ये वाले क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर दिए. जो इनएक्सपीरियंस अकाउंटेंट था, he had recorded these balances on the debit side. Your left hand side is debit side, your right hand side is credit side. So again, this is debit side, this is credit side. Now we will identify the errors and mistakes done by that accountant. अब हमें क्या करना है, हमें चेकिंग करनी है, हमें उसकी गलतियां निकालनी है कि उसने क्या क्या गलती की है. सो कैश इन हैंड का डेबिट बैलेंस होता है, ये तो सही लिखा है उसने. प्लांट एंड मशीनरी, इट ऑल्सो हैज डेबिट बैलेंस, दैट इज ऑल्सो रिकॉर्डेड करेक्ट. टाइपराइटर एसेट विल हैव डेबिट बैलेंस, करेक्ट. ओपनिंग स्टॉक विल हैव डेबिट बैलेंस, करेक्ट. परचेजेस विल हैव डेबिट बैलेंस, correct. Carriage inward sales return will have debit balance, correct. Carriage outward is purchase return. Purchase return will have credit balance, but he had recorded on the debit side. So this is wrong. This is one of the mistake done by him. So, पहला क्या है, कैरेज आउटवर्ड. कैरेज आउटवर्ड क्या होगा, क्रेडिट होगा. उस भाई साहब ने क्या किया, डेबिट साइड रिकॉर्ड कर लिया, तो ये क्या करी, उसने गलती करी. देन डेटर्स, डेटर्स आर एसेट विल हैव डेबिट बैलेंस, करेक्ट. बिल्स पेबल इज लाइबिलिटी, it will have credit balance. So this is also another mistake. This is one of the another mistake. Now coming on to the next debit item, rent paid. Rent paid expense, yes, it will have debit balance. Wages expense, yes, it will have debit balance. Advertisement, yes, advertisement is expense and it will have debit balance. Then discount received is income. Income will have credit balance. So this is the third mistake. अभी तक इसने 3 गलतियां कर दी हैं. बताओ कैसा अकाउंटेंट है, उसको ये भी नहीं पता कि डिस्काउंट रिसीव डेबिट होगा या क्रेडिट होगा. सो डेबिट वाले सारे आइटम्स देख लिए. अब वी विल गो टू दी क्रेडिट साइड. Now we will look at the credit side. Bank overdraft. Bank overdraft is a liability. Yes, it will have credit balance. It is correct. Capital. Yes, capital will have credit balance. Goodwill will have debit balance. So this is wrong. This is another mistake. Creditors will have credit balance, correct. Sales will have credit balance, correct. Return inward, sales return will have debit balance. This is wrong.
Drawings. Drawings will have debit balance. This is also wrong. Investment, asset, it will also have debit balance. This is also wrong. So these are the mistakes that are done by the inexperienced accountant. तो हमें ऐसा अकाउंटेंट नहीं बनना, हमें अच्छे से नॉलेज लेनी है और सारे अकाउंट्स सही बनाने हैं. So now we have identified each and every mistake done by the accountant. Now we will prepare the trial balance again in a correct form. तो आइए, let's prepare the trial balance in a correct form. So this is our solution. Cash in hand, debit. Plant and machinery, debit. Typewriter, asset, debit. Opening stock, asset, debit. Purchases, expense, debit. Purchases, expense, debit. ओके, अकाउंटेंट ने आपसे नहीं पढ़ा इसलिए. ओके, कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस, डेबिट. कैरेज आउटवर्ड, कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंसेस. कैरेज इनवर्ड एंड कैरेज आउटवर्ड बोथ आर एक्सपेंसेस, बोथ विल बी डेबिटेड. तो मैंने यहाँ कोई गलती तो नहीं करी ना? ओके, सो यहाँ पर मैंने ये गलत कर दिया. कैरेज inward and carriage outward both are expenses, both will be recorded on the debit side. I have assumed carriage outward as return outward. So carriage inward हो या फिर carriage outward हो, दोनों का debit balance होगा, because दोनों ही क्या है? expenses हैं. दोनों ही क्या है? expenses हैं. STR गेमिंग, अगर किसी से गलती हो जाती है तो उसको मारना नहीं चाहिए, उसको प्यार से समझाना चाहिए. तो उसको क्यों मारे अकाउंटेंट को? उसको समझा देंगे ना. देन डेटर्स. डेटर्स आर एसेट्स, इट विल हैव डेबिट बैलेंस. बिल्स पेबल, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, इट विल हैव क्रेडिट बैलेंस. Rent paid, expense, expense will have debit balance. This is wages, wages, wages are expenses, it will have debit balance. Advertisement, expense, debit balance. So now you can see that we are recording each and every item in a correct form. जो गलतियां अकाउंटेंट से हुई थी, अब हमने उनको क्या किया? सुधार दिया. वी हैव रिकॉर्डेड अ ट्रायल बैलेंस अगेन. डिस्काउंट रिसीव्ड, उसने क्या कर दिया था? डिस्काउंट रिसीव को डेबिट कर दिया था, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड इज इनकम, इट विल बी क्रेडिटेड. बैंक ओवरड्राफ्ट लाइबिलिटी, क्रेडिट. कैपिटल, क्रेडिट. गुडविल विल बी डेबिटेड. अकाउंटेंट ने गुडविल को क्रेडिट कर दिया था, बट वी नो दैट गुडविल इज डेबिटेड, सो वी विल डेबिट द गुडविल. क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, क्रेडिट. सेल्स रेवेन्यू, क्रेडिट. रिटर्न इनवर्ड, सेल्स रिटर्न, व्हाट कम्स इन? डेबिट. ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग्स उसने क्या करी थी? क्रेडिट करी थी, लेकिन हमें पता है कि ड्रॉइंग्स डेबिट होंगी. ड्रॉइंग्स डेबिट. सिमिलरली इन्वेस्टमेंट भी उसने क्या कर दी थी? क्रेडिट कर दी थी. तो हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. और आफ्टर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी आइटम इन अ करेक्ट फॉर्म, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन दी ट्रायल बैलेंस, अगर ट्रायल बैलेंस में कोई डिफरेंस आता है, that you will write in suspense account. If there is any difference, if there is any balancing figure, then the balancing figure will be transferred to suspense account. 3820, this is balancing figure. And discount allowed came debit or credit. Samta, discount allowed is a loss, it will be debited.
जागृति, जब आप नया ट्रायल बैलेंस बनाओगे तो आपको सारे अकाउंट्स लिखने हैं, सारे, सिर्फ गलत वाले नहीं लिखने, सारे लिखने हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में तो बैलेंसिंग फिगर सस्पेंस में ट्रांसफर क्यों किया, कैपिटल में क्यों किया? क्योंकि पिछले वाले क्वेश्चन में हमने ट्रायल बैलेंस सही बनाया था, हमने ट्रायल बैलेंस सही बनाया था और उसमें बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में ही जाएगी। यहां पे क्या था, यहां पे पहले टोटल इक्वल था, इस वाले ट्रायल बैलेंस में पहले टोटल इक्वल था। ओके, लेट मी टेल यू द डिफरेंस हियर। This is the first question. This is the first question. In this question, the total is not given. In this question, the total is not given. तो आप ट्रायल बैलेंस बनाओगे और जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी वो कैपिटल में जाएगी, जो भी बैलेंसिंग फिगर होगी वो कैपिटल में जाएगी। जब टोटल गिवन नहीं होता तो बैलेंसिंग फिगर क्या जाएगी, कैपिटल में जाएगी। जब टोटल गिवन नहीं है तो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल में जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, फिफ्थ क्वेश्चन में हमें टोटल गिवन है, हमें टोटल गिवन है, यहां पर टोटल गिवन है जो टोटल मैच नहीं हो रहा। सो इफ टोटल इज नॉट मैचिंग एंड इट इज गिवन, तब जाएगा सस्पेंस अकाउंट में, तब कहा जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। सो इफ टोटल इज नॉट गिवन देन द बैलेंसिंग फिगर विल बी कैपिटल, क्योंकि वहां पर कैपिटल गिवन नहीं थी और टोटल गिवन नहीं था। इन द प्रीवियस क्वेश्चन कैपिटल वाज आल्सो नॉट गिवन, लेकिन इस क्वेश्चन में कैपिटल इज गिवन, यहां पर तो कैपिटल गिवन है। In the previous question, capital was not given, so we have taken the balancing figure as capital. But in this question, capital is already given in the question, so you cannot take the balancing figure as capital because it is already given. तो हम क्या लेंगे balancing figure को, suspense account. Okay, Gaurav? Samta, suspense account may have debit balance or it may have credit balance. Suspense account का debit balance भी हो सकता है और credit balance भी हो सकता है. So now the difference is transferred to the suspense account. तो आपको ट्रायल बैलेंस में सिर्फ इतना याद रखना है, इफ कैपिटल इज गिवन, अगर कैपिटल गिवन है तो जाएगा सस्पेंस अकाउंट में। इफ कैपिटल इज गिवन इन द क्वेश्चन देन द डिफरेंस विल बी ट्रांसफर्ड टू सस्पेंस अकाउंट, एंड इफ कैपिटल इज नॉट गिवन देन द डिफरेंस विल गो टू कैपिटल अकाउंट, then the difference will go to capital account. आपको सिर्फ ये याद रखना है, आप टोटल मत देखो, don't look at the total, just look at these two things. If capital is given, then the balancing figure will go to suspense account. If capital is not given, then the balancing figure will go to capital account. Don't look at the total, otherwise you will get confused. So now tell me, is this question clear to everyone? Is there any doubt now? Hi Manish, hi Neetu, a very good afternoon. Yes Parth, yes Preeti. Jaldi jaldi batane ka, is this question clear to all of you? Clear Jagrati, clear Azu. So guys, do you want more questions like this? Do you want more practical questions like this? Yes.
Neetu, you don't want to score good marks? If you guys are paying attention in these sessions and you are revising these questions again at home, then I can guarantee that you can easily score good marks. अगर आप यहाँ पर क्लास में ध्यान दे रहे हो और घर जाके क्वेश्चंस रिवाइज कर रहे हो तो कोई भी आपको अच्छे मार्क्स लाने से रोक नहीं सकता. तो हमने ये सीरीज इसीलिए स्टार्ट करी है ताकि आपकी सारे चैप्टर्स की रिवीजन हो जाए. सो इन क्लासेस में कृपया करके ध्यान दें और इन्हें घर जाकर दोबारा से रिवाइज करें. घर जाकर नहीं, घर पे दोबारा से रिवाइज करें. So guys, if you want more classes and more questions like this, then you can take Vedantu Commerce Pro Subscription, in which we are providing you all of these benefits. We are providing you all the subject. We are providing you more than 10 teachers having 5 years of experience. We are providing you unlimited sessions, unlimited live classes. We will also provide you regular tests, regular question, regular assignments. And all these teachers will work on your continuous areas of weakness, they will continuously work on your areas of improvement. And all the teachers will be teaching in English only. सारी classes सिर्फ English में होंगी. So the actual price of this pro subscription is 3499 for 1 month. But right now we are giving you flat 20% discount, and after discount you will only have to pay 2799 for all the subject. So per subject you have to pay only 699. Per subject आपको सिर्फ 699 pay करना है for 1 month. And that is quite a good cost to score good marks. So if you guys want to score good marks in your exam, go and take your pro subscription right now because you have limited time. And you can use my code SCPRO to take your pro subscription at flat 20% discount. दिया बच्चा पहले 11th कर लेते हैं फिर 12th भी स्टार्ट कर लेंगे. मनीष, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं. वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर. ममता, वेटिंग फॉर 6 PM. सो टू गेट मोर क्वेश्चंस लाइक दिस, अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस करने हैं हमारे साथ, सो गो एंड take your pro subscription. And now stay tuned for the next class. In next class we will be doing the chapter rectification of error. अगले क्लास में हम लोग करेंगे rectification of error. So stay tuned for the next session. And the most important thing, tomorrow at 4 PM, कल 4 बजे, I am going to tell you how to grab 20 out of 20 in project work and viva. प्रीति, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आप जाके वीडियोस में चेक कर सकते हो. यू कैन चेक आउट दी सीरीज. सो कल 4 बजे के लिए तैयार रहना. टुमारो एट 4 PM आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू स्कोर 20 out of 20 in project work and viva. And at 6 PM tomorrow, I am going to do question paper analysis, that how to read a question and how to master the art. So tomorrow we will be having very important classes at 4 PM and 6 PM. And everyone can attend this class, whether you are from class 11th or class 12. सब ही इस class को attend कर सकते हैं. Now, for daily updates and for daily notes, go and subscribe to our channel Vedantu Commerce. And don't forget to like this video and share this with your friends. And you guys can also join our official Telegram group so that you can receive all the notes in the PDF form.
The link of this Telegram group is in the description box below. Hi Shravan. Thank you everyone for watching this session. I hope that you all enjoyed this one. So don't forget to like this video. Today I am not going to sing any song because song will be on alternate day. Daily song नहीं गा सकते बच्चे हम. I will be singing song on alternate days. So मैंने कल गाना गा दिया था, आज कोई गाना नहीं होगा. So now see you all in the next class tomorrow at 4 p.m. with one of the interesting topic. Till then, good night, have sweet dreams and take care. Bye everyone.